सो ब्यूटीफुल, हिल्स में जाता है, फ्लावर्स देखता है, फ्लावर्स देखने के बाद उसको लगता है कि मैं तो सो ब्यूटीफुल मदर, लेट मी गो आउट एंड सी द वर्ल्ड। तो मदर सेज नो, अभी नहीं तुमने जाना, सी द वर्ल्ड इज वेरी बैड, बाहर बहुत सर्कमस्टांसेस होंगी, तुम्हें हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, आप बाहर नहीं जाओ। ठीक है, वो अंदर मदर से क्वेश्चन पूछता है, मम्मी भी उसकी इरिटेट होती रहती है कि क्या है, तो क्वेश्चन पूछता रहता है, यू आर बिकमिंग सो बिग, मेरी जो सीम्स है वो फट रही है, तुम बहुत बोलते हो, ये करते हो, तुम चुपचाप बैठ जाओ। बच्चा भी चुपचाप बैठ जाता है। एक दिन वो आता है, एक दिन देखता है ब्यूटीफुल फीमेल कंगारू देखता है, बोलता है मम्मी आई वांट टू बी फ्रेंड हर, मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे उससे शादी करनी है। तो मदर कहती है कि क्या हो, मेरी सारी सैक्रिफाइस जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम सब भूल जाओगे, सब चले जाओगे उससे शादी करके, तुम तो आगे अलग हो जाएगी, मेरा क्या होगा। ओके, चुपचाप वो अपने पाउच में बैठ जाता है। धीरे धीरे ये होता है, वो क्वेश्चन पूछता है, ये उसको स्नब करती है। एक दिन क्या होता है, वो मदर कंगारू मर जाता है, उसके 2 घंटे में बच्चा भी मर जाता है। तो बच्चा पाउच के बाहर निकाला जाता है, तो देखता है कि what is the theory nowadays? Theory of motivation. McGregor's theory. You should realize about your home, your personal life, and the organization where you are working. If you have your bosses like the mother of the kangaroo, what will be your situation and what should be the situation in the organization? I want 5 minutes discussion to get talk, and then we will discuss on the topic. 5 मिनट इस टॉपिक पे आप डिस्कस करिए। क्या एटीट्यूड होना चाहिए था बच्चे का, क्या एटीट्यूड होना चाहिए था माँ का, क्या एटीट्यूड है दोनों का, और क्या होना चाहिए। Seeing the situation of your home, that is your family, seeing the situation of your organization, आपके बॉस और सबॉर्डिनेट, ये आप डिस्कस करें। That will come out, generate with the behavior किस तरह से होना चाहिए और please discuss. One person can coordinate and other can discuss, and one can write the points. The behavior of the child here. Behavior of the child. The child wants to get out of the boundary wall. Mike, don't be here. Boundary wall of his mother. Be on your toes. And he wants to avail the opportunity. He wants to see the world. Until and until the mother allows him to go outside, let him free, he'll not experience the things in the world. And he will not get anything, he will not avail any opportunity in the world. What is the drawback then? What is the drawback if you don't get opportunity? Then you will be covered in that shell only. And you will not explore yourself. Okay. You will not, in this competitive world, you have to gain everything. Whether in knowledge, whether in learning. Joshi, Mike here. Just out of that, boundary walls will explore the world. That is what we. What should be the attitude of the child? What is the behavior of the child? Please tell me. Then I will not have to in any industry. Right? कि नहीं बेटा बाहर नहीं जाओ, बहुत बुराई है बाहर, इतने स्ट्रगल्स करते हो, तुम मेरे छत के नीचे रहो, क्या सिचुएशन होता तुम्हारा? I will destroy after 18 years only. Destroy yourself after 18 years. You know? So क्या करना चाहिए था वो कंगारू को? क्या करना चाहिए? कंगारू को क्या करना चाहिए? उसका बिहेवियर कैसा है? He should be more demanding to his mother. That he want to go out and see the challenges of the world. Okay. And the child must have proved his confidence in his mother that I can do well and I can go out and you won't be afraid of my behalf. He must have convinced his mother that Okay. So the behavior of the child was a passive attitude. Passive attitude, a submissive attitude. Similarly, आप ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, अगर आपका बॉस डिमांडिंग हो, नहीं तुमने ये करना है,
आपकी ग्रोथ कितनी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको नहीं, मेरे तरीके से ही आपने करना, जैसे मैं कहूँ आपने वैसा ही करना, तो आप पहुंचे होते जहां अभी आप हैं। See your personal situation, see your organization situation. What is the mother's behavior here? Mother is your boss in the organization. Yeah. कैसा behavior है mother का? Dictatorship. Dictatorship. No, the mother loves the kid so much. The kid wants to be safe. Okay, mother's love is also there. Yes, so Mother she knows when to expose the kid to the outside world. But Not did that she way. expose the kid? No, it's not. She did. She did it. See, the love for the mother is अपनी जगह, ठीक है? Mother is protected towards the child. इसलिए वो जाने नहीं देंगे। देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, अगर बाहर जाए किसी को उठा ले, एवरी डे किडनैपिंग केसेस आते हैं, लेकिन उसको हमने एबल करना है। अगर छोटा बच्चा जा रहा है उसके साथ जाओ 2-3 दिन, उसको कॉन्फिडेंस दो, नहीं तो आगे दुनिया बहुत फास्ट है। I was telling my child, see the difference even if he is studying in APJ, कि APJ और दिल्ली के बच्चे में बहुत फर्क है, फरीदाबाद और दिल्ली के, क्योंकि उनको दिल्ली has more exposure. That's why I told him you attend the training program in British Council. बच्चों का करते हैं वो छुट्टियों में पता देगा, public speaking, role play, extensive program करते हैं, तो you go, I'll hire a taxi, you go there, at least you will be able, नए लोग मिलेंगे। हमें एक्सपोज करना है अपने बच्चे को बाहर, नहीं तो यहाँ मदर बहुत एग्रेसिव या ट्राइंग टू से द एग्रेसिव बिहेवियर। अगर आपका बॉस एग्रेसिव रहेगा आपकी ग्रोथ कम होगी। कैसा होना चाहिए? यू नो देयर इज अ मैकग्रेगर थ्योरी, पीपल फ्रॉम एचआर आर देयर। हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम एचआर? ओके, हु इज फ्रॉम ओरिएंट फ्रांस? यू आर Abhilash? Abhijit, sorry. And where Satya Prakash? Actually, due to some urgent work, he has to go to the country. Okay, you are in the HR. Okay. So you must be knowing about the McGregor theory. Okay, this theory is about X and Y. Carrot and stick approach होता है, डंडे की जोर से आगे बढ़ना। That is called carrot and stick. ये था पहले, मे बी 20 साल पहले, जो जिनको 20-25 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन में उनको पता होगा कितना सिनेरियो चेंज हो गया है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। फिर वाई थ्योरी में था कि चलो थोड़ा सा स्पेस दो अपने सबॉर्डिनेट को कि ग्रोथ करे। नाउ इट इज अ जेड थ्योरी दैट हैज कम अप। जेड थ्योरी मींस कि अपने आप थोड़ा सा गाइड दो, सुपरवाइज करो एंड लेट द सबॉर्डिनेट डू व्हाटएवर ही डज। आपने थोड़ा गाइड करना है। दैट इज द सिचुएशन एट होम। बच्चे आजकल बहुत एबल हैं, टेक्नोलॉजी इंटरनेट हैव चेंज्ड द चिल्ड्रन। Let them do whatever they want, but have a security. Nowadays, क्या हो रहा है? उस दिन टीवी में आ रहा था about tribal laws, about laws, internet laws. आजकल बच्चे ऑर्कुट में देख रहे हैं। They're seeing so many sites, लेकिन वो बच्चों को पता नहीं है कि अगर कुछ चीज गलत हो जाए, law is so active, but we have to be as a safer side. उनको एक्सप्लोर करने दो, लेकिन हमें उनको देखना है कि वो गलत राह पे नहीं जाते। That is what is the role of a superior. Now, what should have been the role of the mother and the child? This is the theory where passiveness is passive, मतलब आप तो बुला रहे हैं, I am not okay, you are okay. मैं ठीक नहीं हूँ, चलो माँ जो कह रही है, माँ जो बोलती है मुझे करना है, कर लेते हैं। And what is the other thing? I am okay, you are not okay. जो aggressive mother है कि मैं ठीक हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो ठीक हूँ, तुम चाहे जो भी करो। But what is the theory? I am okay and you are okay. मतलब we have to have the assertiveness which is necessary in life. We have to have the assertiveness behavior. आप मौका दो बॉस, अगर आप बॉस हैं आप अपने सबॉर्डिनेट को मौका दो कि वो कुछ बोले, बाद में आप उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। अपने बच्चे को बोलिए कि बोले जो चाहता है बोलने, बिकॉज वी हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। वी हैव टू बी अ गुड लिसनर एज अ सुपीरियर, एज अ सबॉर्डिनेट, वी हैव टू लिसन। Similarly in the situation at home. चल रहा है?
is assertiveness. Now I have a short exercise on interpersonal behavior to see what you are. Are you assertive? Are you a passive? Or are you a assertive? This is basically I am okay, you are not okay. I am not okay, you are not okay. That is the attitude. अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो तुम्हें भी ठीक नहीं होने देना. अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम मेरे लिए कर रहा है तो मैंने भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम करनी है. The defensive attitude, being possessive, show off kind of attitude, perfectionist, workaholic, and talkative. Next, what is the payoff? Payoff is basically needs are met. Payoff उसका क्या होगा? Needs are met. In the payoff, it's more powerful, and the consequences will be. अगर आपका aggressive nature होएगा, तो loss of control and alienation, मतलब loneliness रहेगी अगर aggressive रहोगा. Now passive behavior है अगर away from others. आप अपने में ही रहते हो passive nature में, and escapism attitude. That is, I am not okay, you are okay. Giving away my power, avoid taking responsibilities and decisions, pleasing others. What is happening to me? Over adaptation, peace lover. They are कि चलो हम लोग चुप रहते हैं. Passiveness में चलो मैं चुप रहूंगी ना, तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा. दूसरा भी चुप रहने वाला एटीट्यूड ज्यादा रहता है कि कोई मुझे तंग ना रहे, मैं अकेले रहूं. Shy people, they are agitated easily. अगर आप उनको छेड़ो, वैसे तो चुप रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा छेड़ो तो एकदम एजिटेट हो जाएंगे. Now payoff क्या होगा? इससे क्या असर पड़ेगा? Comfort and security. अगर आप चुप बैठे रहो, तो ये है कि चलो मैं तो सिक्योर जॉब है, मैं तो कुछ बोलना नहीं है. अगर मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तो दूसरे में तो कि मेरा बॉस भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा. Seen as cooperative, हमेशा किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं. Get no negative feedback, winning control by controlled environment, business people, and being nice. Consequences क्या है? Sacrifice based resentment, the price of being nice, cracking, repression of the negative feedback. Now what is assertive behavior? Assertive behavior means empowerment. आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं. Assertiveness में वो आदमी, वो बेसिकली ये होएगा कि वो अपनी राय जरूर रखेगा, ये है, लेकिन दूसरे का भी सोचेगा कि वो भी ठीक रहेगा, दूसरे के बारे में भी करेगा. बिकॉज एक होता है आपका putting yourself in other shoes, एक होता है sympathy और एक होता है empathy. Sympathy means किसी का करना कि वो बेचारा बहुत गरीब है. Empathy is आप अगर गरीब होते तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया. We should have a empathetic attitude. अगर जैसे आजकल कंपनीज में HR में वेलफेयर पॉलिसीज होती है, आजकल आयशर में तो बहुत ज़्यादा थी, उसमें था कि even if they have a problem at home, the welfare and the HR department used to go to their home to see the problem. क्यों? That is indirectly affecting the worker. और इतनी अच्छी वेलफेयर पॉलिसीज थी कि जब आयशर में प्रॉब्लम आई तब वर्कर्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया. दैट इज दैट कि वो भोपाल चली गई ड्यू टू उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, मैनेजिंग फंड्स की प्रॉब्लम थी. दैट्स व्हाई इट शिफ्टेड एंड आफ्टर दैट इट वाज टेकन ओवर बाय टेफेड. They face the realities of life much better. Okay, I am okay and you are okay. Sense of responsibility they see. Controlling. Controlling of uniqueness. I will, you will situation रहता है कि मैं भी ठीक हूँ, तुम भी जीतो, मुझे भी जीतो. Transparency, living every day, interpersonal communication and intimacy. Euthanasis means एक दूसरे से बातें करना. मतलब you seeing the situation, the
स्ट्रेस सिचुएशन में आप किस तरह हैंडल करते हो, बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ग्रोथ. The way of the sense of self-worth, fulfillment, relationship, reduce fear and anxiety, living one's own life, masterpieces, consequences, that is, create comfort, दूसरे का आराम की भी देखता है, ध्यान देता है, become vulnerable, breaks dysfunction, जगह दो कि मैं growth कर सकूं. I possess sufficient self-love and assert myself to fulfill my potential and empowering yourself. That is me. Assertion for you. आप दूसरे के लिए क्यों assertive हो और क्या कर सकते हो अगर आप assertive हो दूसरों के लिए. I have a commitment, responsibility for your happiness. अगर मैंने assertion for you, that is, आप अपने subordinate के लिए, अपने बच्चे के लिए या जो भी आपका dependent है उनके लिए. I have a responsibility for your happiness, your growth. I don't wish to control and possess you. मैंने तुम्हारे पर dominance नहीं करना है, मुझे तुम्हें growth देनी है. I possess sufficient love for you to help you to assert yourself, to fulfill yourself, to fulfill your potential, motivating to be you. Now हमारे लिए assertion क्या है, हम सब के लिए assertion देखना है. आपने ये एक्सरसाइज कर लिया, आप कर लीजिए एक्सरसाइज, then we'll rate you. Okay? तो इसको बंद कर एक्सरसाइज करें. That is your 3, 6, 9, 12, 15 and 8. I have beautiful presentations. You like क्या check करना है? 15 already taken. 15 तो हो गया. 15 तो पहले हो गया. अच्छा नहीं 15 नहीं है. 3, 6, 9, 12, 14 and 18. 17 also. 14 and 18 मैंने कहा. 17 होएगा, सॉरी. 17 also. अच्छा नहीं ऊपर में 14 रह गया. ऊपर वाले में 5 का स्कोरिंग आ रहा है ना. 14 का क्या है? I will ornament the dominating. ये 14 ऊपर आएगा. Aggressive is aggressive one. 15 के बदले आपका क्या रहेगा? 17. जहाँ फ्लॉज है आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. अभी आपको बता देगा. Aggressive जैसे माँ का था and assertive जैसे mother. Are you happy you are also? I am okay, you are okay. There's a book on I am okay and you are okay. There's a book on that. Okay, सबका assertive score कितना आया सबका? 19? 21 तो आ ही नहीं सकता. 20 तो फाइनल स्कोर है. 19. Assertive, aggressive कितना आया? 30. Mild है. सब माइंड है. किसी के 12 भी आया? 12 तेरा मतलब यू आर नॉट असर्टिव. पैसिवनेस कितना स्कोर आया? ओके. अगर आपका पैसिव 17 है, दैट इज नॉट मोर टुवर्ड्स पैसिवनेस. असर्टिव हो लेकिन इन सर्टेन सिचुएशंस आप पैसिव हो जाते हैं. अब इसका स्कोरिंग, इसकी रेटिंग ठीक आई है कि पैसिवनेस इसका ज्यादा आ रहा है, एग्रेसिवनेस कम है, लेकिन शी ट्राइज टू बी असर्टिव. हाँ जी. मेरा पैसिव भी 9 आया, एग्रेसिवनेस भी 9 आया. कितना 9 आया? और असर्टिवनेस 19 आया. गुड ना, गुड. लेकिन पैसिवनेस इतना कम, बैलेंसिंग नहीं होगा. See, these exercises, what you have to do, आपने सोचना कम है इसमें. जो आपके दिमाग में पहला चीज आती है वो उसमें आपने देखना चाहिए. इसमें ज्यादा Passive is also 9 and assertive is 9. Aggressive is you are okay. aggressive is 19. This is like what his mother was doing. Okay. So you mean to say that attitude was good, what mother was doing with the child? No, attitude wasn't good enough because seeing the situation, you have to change the situation. अगर आप, if you remember, there was a story
was a real life story. 3 years ago, it came in papers and it hit the news. It was a lady whose husband was murdered by the brother, I think so. Husband का brother ने murder किया था और the lady assumed कि इसके देवर ने मारा है उसके husband को. उसने अपने 3 लड़कों को एक कमरे में बंद करके 3 साल रखा. 3 साल रखा. खाली रात को एक बच्चा जाता था, लाइटें बंद, कुछ नहीं, क्योंकि उसको डर था कि मेरा देवर आके मेरे बच्चों को मार देगा. उसको ये डर था. इट वॉज अ न्यूरोसिस केस. साइकोलॉजी में न्यूरोसिस केस होते हैं जहाँ डर होता है फ्यूचर का. उसके 3 बच्चे. इमेजिन सिचुएशन आफ्टर 3 इयर्स उन बच्चों का क्या हुआ. 3 साल बाद उसका न्यूज में था कि these 3 children, उनकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं थी. एक कमरे में सब कुछ करना उन्होंने, क्योंकि उसको डर था मेरे बच्चों को कोई मार देगा. बाद में 3 साल बाद कैसे एक्सपोज हुआ कि एक बच्चे में थोड़ी सी हिम्मत थी, वो आके बाहर आया, नेबर से बात की और ये सिचुएशन सामने आई. दिस वाज द सिचुएशन. आई टेल यू अ केस इन आयशा व्हाट हैपेंड. दिस वाज अ केस ऑफ अ वर्कर. सरदार जी थे, हरबंस सिंह याद है नाम, चावला कॉलोनी में रहते. उनका था मैंने ज्वाइन, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी मुझे. ऐसे थोड़ा सा बात करने से पता लगा कि he had a problem at home. प्रॉब्लम was कि एक उसकी लड़की को ल्यूकोडर्मा था, जो वाइट पैचेस थे उसके बेटी को. तो वाइट पैचेस के कारण ये होता था कि उसके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम थी. उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया. तो दिस लेडी जो उसकी बेटी थी ट्राई टू कमिट सुसाइड. ये एक सिचुएशन थी. एक चीज उसके कारण. दूसरी सिचुएशन थी उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था. दूसरी लड़की की शादी करनी थी, उसके लिए दहेज इकट्ठा करना था, वो प्रॉब्लम. फिर उसका ये 2-3 और प्रॉब्लम जनरेटेड थी. और एक दिन आई वॉज इन माई फैमिली बेस, आई टेकन लीव फॉर 3 months कि मुझे यूनियन लीडर का फोन आया कि मैम अभी के हॉस्पिटल जा सकते हो. क्या हो गया. हरबंस सिंह जी हॉस्पिटलाइज गए. तो दैट पर्सन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस इन द लेटर हाफ. व्हाट हैपेंड टू हिम इन स्ट्रेस. उसकी स्पीच खत्म हो गया. आई डिडंट सी अ केस ऑफ स्ट्रेस में इतना प्रॉब्लम है. जैसे सर ने कहा था कि फिजिकली ये सारी चीजें देखी जाती हैं. उसके स्ट्रेस के कारण उसकी स्पीच चली गई थी. He lost the walking sense also. चलना भूल गया था. तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसका एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम रहेगी स्ट्रेस की. फिजियोलॉजिकली ही इज ओके एंड ही हैड दिस स्लरिंग इन हिज माउथ. बताने की कोशिश कर रहा है. आई मेट द साइकियाट्रिस्ट. द साइकियाट्रिस्ट टोल्ड कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस एंड वी कैन हेल्प हिम इफ हिज फैमिली कैन हेल्प. उसका ये केस था. उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके थोड़ा एजुकेट भी फैमिली को. आई टोल्ड यू द आयशा वाज वेरी मच, द एचआर वाज वेरी मच इनटू फैमिली टू मेक द पीपल ओरिएंटेड एंड हैव द ट्रस्ट अमंग द पीपल. ट्रस्ट जनरेट करता है एम्प्लॉयज की तरफ. अगर ट्रस्ट होएगा, कोलैबोरेशन विल बी बेटर ऑफ द एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन. दैट यू ऑल्सो नो. तो इसका 6 months इलाज कराया. साथ में रेगुलरली काउंसलिंग होती थी इसके फैमिली की. इसकी फैमिली ने तो सोचा कि ये जी गए. इवन द वर्कर्स थॉट कि ये गए. लेकिन 6 months बाद he entered the company walking and happy. That gained, I tell you, I had joined 6 months before. That gained the trust among the workers for me and the organization, which helped totally with the money and other things, and total support of the department and the organization towards him. ये एक ट्रस्ट के कारण वर्कर्स मैनेजमेंट के हाथ में होता है. And when he retired, एक बात कहूँ, he touched my feet. Imagine a 58-year-old person touching my feet in front of the farewell. जब सबका farewell था कि मैं जिंदा हूँ उनके बाद. That was a very nice feeling, nice emotion a person had, just because he totally generated trust. तो आज भी कभी वो मुझे फोन करते हैं, पूछते मैडम क्या है, कैसे करें. Still left company 6 years back, लेकिन अभी तक एम्प्लॉयज का फोन आता है.
मैम आप कहाँ हो? So this is a small incident I'm telling how to generate trust. सब कुछ आप पैसे के लिए नहीं करते. You have to gain trust among the people who work with you. That is what is needed. So this was the session. I think so we should be off with the session now. We'll go for lunch and then we'll have a game session to make you active. Okay? There are lots to say, lots to speak, lots to do. Okay? And there are many gifts. नहीं अभी मैं बताती हूँ क्या. हाँ इनाम मिले. They are looking for the bottle. That's why they are. This is a golden bottle. Golden. Now what you have to do is, what you have to do is you have to make a figure out of it. Okay? I'll give you 5 minutes. You have to make a figure out of it. This is a management game. And judgment will be based on the stability, the beauty and the height. Height. Any figure you want to make. Height or length? Hanji? Height or length? Height, beauty and stability. The time starts now. नहीं group work करना है, team work. This is a team exercise. ऐसा करके team work करना है. How you will do team work that depends on you. जितने दिए आप सारे यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ लगा के यहाँ कर दीजिए, फिर ऐसे करिए और वो लगा दीजिए, यहाँ पे ऊपर लगा मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 साइंस को कम से कम जुड़ा कहाँ से आपने? खड़ा भी नहीं है, बैठा भी नहीं है. यार मिश्रा जी आप बिना भगवान कसम आपकी वेट रही हो. वो सब तकती बना देना. 1 2 3 4 5 6 एक गिनती कम है. ये काम करो ना, इसे गोल घुमा. थोड़ा आगे चल कर रखिए अपना सब इतना बिजली पैदा करो. Yeah, that's good.
Sir, basically it is the हिंदी में कहता हूँ CD to achieve your goals, a ladder to achieve your goals to the heights. So give them big hands. They are at least thinking of achieving success through this ladder. Good. Best wishes and good luck. Thank you, sir. Thank you. Another team, they are also looking for the same ladder. Please hold this. Same. What is your team? What is your concept? Actually, our objective is to be show a ladder of success. Okay. Basically, how do we achieve our goal is to be down to the top. I think the objective is the same, and we should also think little different from somebody else. It's a repeated effort. We also appreciate the same. Thank you very much. Come to the side. How to grow and start, sir. There is a third concept. They say To start how to grow like a star. from ground. It is like, basically from earth to a star. This is the success story they want to show. How we can. Thank you very much, Mishra. Sit down. Fourth team. That is by Dr. Sir. Dr. Sir, you had another concept? Actually, we are trying to signify that three people are holding the world, and that's a basic teamwork through which they are going to rule this world. Good concept for team working. You can show it to the people who are sitting in the last. Okay, thank you. Next. The team is headed by who? The ma'am has told us to make a thing which is of stability, beauty and height. So thinking that in mind, we made a peacock, which is a beautiful bird having that feathers and all of colorful, and that has a stability and make others cheerful when he is cheerful. Okay. Good. They have made peacock and they have depicted what is the beauty of the peacock, the height, the stability and the beauty. So give them good hands. They have made good concept. Yes, please. तंदील जो दिवाली के शुभ अवसर पे हर घर के अंदर दीपकों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है for the prosperity of the family and development. Similarly, it is being used in the organization with our strong winning team. So this is for the prosperity of the industry कि दीपक ये हमेशा जलता रहे और हम अपनी स्ट्रॉन्ग विनिंग टीम से वर्ल्ड क्लास बनते चले जाएं with the help of love and peace. Good, good. Give them good hands. It's a good effort and good concept. They say that with our team effort, we will make our organization number one, and we will achieve world class position. Thank you very much, Johan sir. Your efforts are laudable. Your concept is very good, and I must say, there are the prizes. Who has done a favor to the people, those who have got first position. And let me tell you, who are winning this first position, they are people who are starting from down to the stars. Down to the stars. Give a good hand. And you please come and have their chocolates. 6? Why 6 is there? Other? There are only 5. That's not the matter, ma'am. That's not. There's one more. And second best was from Mr. Chauhan and Party. Mr. Chauhan and Party. Very good concept. There are another, only one. Only the clapping, only the motivation of clapping. Good work done, concept. Thank you. And the third best in the series was led by Daksa from Indian Oil Corporation. The lady is there who is leading this team of 4. Give them good hands. Yes, please stand up. All the 4 should stand up. There comes Shastra, very laudable and nice. They have also said it
that we have to work like a team and our motto should be fair, firm and nice. So all the three teams, congratulations for their teamwork and good thing that their concepts were getting different. Thank you very much, Shikari, for another concept, another thing. This is about creativity. Why creativity is important. So this is an individual game. Okay, this is an individual of the problem. Okay, everybody says the first one will get the prize. The first one right. Under 5, this is equal to 550. What you can do is you can change this. Yeah, only the first you can change. This is an exercise of creativity, how creative you are. How creative, you know about the left side and the right side brain. More of systematic right side is creativity. Yes. First one. Very good. This is 4. This is what is creativity. 5 4, 5 plus 5 is 550. So that's a gift for you. Please have this. Myself, Pramod Saini, representing Sterling Tools Limited. Thank you for the award. Thank you. Actually, time was less. Otherwise, I would have an exercise, but it takes half an hour. That is interaction and talking about yourself and your industry and your strengths and weaknesses. So that was an initial thing. Because of the time less, I couldn't have that exercise. So now the next is the first one will get the prize. This is a cake. Okay? You can cut the cake. You have to cut the cake in 12 pieces. And you can have only 4 cuts. This is a cake. You have to have 12 pieces and 4 cuts. Yeah. You have to cut this cake into 12 pieces. You have 4 chances. Vidya is trying. Let's see how good she can. 2, 3, 4. 1, 2, 3. How many? Next, anybody else? How many numbers she has? 12 pieces you have to cut. How many she has cut? 8. 8. Anybody who can do better than 8? Kindly, please come. He is there. Mr. Chauhan is there. So what time is over for you? कोशिश करके देख रहा हूँ. Just a little. Life. You know about Kaizen in industries. Why Kaizen was introduced? Kaizen is, what is Kaizen? You have Kaizen? After Mr. Chauhan, But that comes through creativity. Japanese concept Kaizen, long back in T12, Kaizen, now Six Sigma. 3. थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है. आइए, please. 3. 4. Only 8 pieces. Dr. Sahab, give it to Dr. Sahab. Kindly be in the line so that you know. 2, 3, 4. Let's see how many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, and 10.
Give them good hands. She has done it up to 10. 10. Good answer. Kindly kilometer mark it again. So we place help in different organizations. Let's see who has done it. Okay. What is your good name? Your good name. He has done it. Okay, very good. Now you Please give them good hand and explain to everybody how he has done it. Vishal, you have already achieved it. You have already seen? No. Okay. Let somebody to explain. Let Mr. Vishal make an effort. Since he has already done it, we will see what is the concept of Mr. Mishra. first of the Then this is second cut, this is third cut, this is fourth नहीं cut. आप खाली लाइन में कट कर सकते हो आप ऐसी बात नहीं है आप कर सकते हो फर्स्ट कट कैसे किया आपने This is round first ये cut. केक है Yes. आपने कैसे काटा केक को मैम आपने राउंड सर्कल दिया ना केक को. हाँ. This is first cut. नहीं केक आपने देखा होगा आपने फर्स्ट कट कैसे किया राउंड ये तो राउंड है ही है हाँ. और ये लंबा है आपने कैसे काटा उसको मैम नाइफ से उसको अगर राउंड काट देंगे तो कैसे फर्स्ट कट ही होगा. नहीं कैसे काटोगे बीच से काटोगे ऊपर से काटोगे कैसे काटोगे ऊपर से काटेंगे. ऊपर से राउंड कैसे काटोगे नाइफ से कट जाएगा राउंड में. वो तो मुश्किल होगा कैसे काटोगे ये बताओ ना केक को आप कैसे काटोगे ऊपर से काटना चाहते हो Yes. ऊपर से ही काटें. ऊपर से गोल चक्कर मार के काटोगे Yes. चलो आप बताओ वैसे ठीक है ऊपर से करना लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा दैट इज आल्सो कॉन्सेप्ट लेट हिम ये भी बता दें आपको सीधा काटना है बेसिकली आपने पहले नहीं बताया. चलो अभी बता रही बात पहले हो गई कॉन्सेप्ट आपका ठीक है लेकिन थोड़ा सा चेंज है आप थोड़ा सा विवर करेंगे ऊपर से केक कभी ऐसे नहीं करता आप देखो कैसे काट सकते हो आपका कॉन्सेप्ट ठीक है लेकिन कहाँ कटेगा ये आप देखिए उसी कट को मैडम हम बीच से काट देंगे, साइड से काट देंगे. इनका कॉन्सेप्ट ठीक है साइड से काट देंगे. हिज कॉन्सेप्ट इज वेरी करेक्ट इन्होंने इनसे पहले कह दिया कि वो हम साइड से काटेंगे But you tell me, हाँ। these are 5 lines. You have marked it. नहीं वो ये करेक्ट नहीं है करेक्ट किसी का हाथी बात है सही सेट करना पड़ेगा ये केक है आपने केक यहाँ से काटा यहाँ से काटा फिर ऊपर से काट दिया कितने हो गए ऊपर से आपने बीच में काट दिया 2 कट हो गए और ऊपर से पूरा काट दिया 2 कट मैम कितने हो गए 12 कट हो गए ना वही इनका कॉन्सेप्ट ठीक था ये ऊपर से कह रहे थे वैसे ठीक है ये उससे Give them big hands. Hello friends, I'm Rajesh Sharma from Class India Faridabad. Thank you. We have not said it that how you have to cut it. You have to think differently. That was the basic idea that how you apply your mind. Creativity. Okay. Think of creativity. There's one more can have furthermore. This is your creativity. How you see an object. Perception. This is called perception. How you see a thing. उसके बारे में
क्या उसके पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, कैसे यूज कर सकते हो आप वो चीज। ये चली जाती नहीं, बंद कर देना थोड़ी देर। पे जाओ, पे जो आइटम दिखाना है ना मुझे दिखा दो। बैक एटीट्यूड से 5 से ऊपर किसके हैं? 7 से ऊपर कौन से? हाँ हाँ 7 से ऊपर 7 किसके हैं? 7 आ जाइए आपका। Is to be a help, is to be a easy to be a carrier, easy to be a handle, and place to be a marker aids also, and used to be a whiteboard and blackboard. Is to be a sometimes we are using is to be a dust cleaners. The first one is for cleaning blackboard, that's for obvious. The second one is to use it as a paperweight. The third one is to hit someone. The fourth one is to nail something, to use it as a hammer. The next one is to place it under uneven sized legs of table. Next one is to put it in between wooden walls from where the light is coming. The next is to clean dirty tables. And the last one what they wrote is to use the door as to knock the doors. Known to us, it's known as the duster. It is black from one side and the white from the other side. Here it is used for cleaning the blackboard, and it cleaning the dirt of the black very beautifully from the blackboard. It keeps the cleanness to the blackboard. It leaves no written words on the blackboard, and when it takes all the dirt from the blackboard, it gives and it absorbs all the blackness of the blackboard, and no spots afterwards are seen on the blackboard. But when it absorbs all the dirtness of the blackboard, it's difficult to handle because it absorbs the dirt of the blackboard. Sometimes it is used as for other uses also. How many points? 9 points. Okay, 9 points. Mrs. Bansal from Indian Oil. So the object is a duster. The shape is a rectangle. It is made up of wood at top side. Bottom side it is spongy item. It is used for cleaning the board, and it can be used for throwing on somebody. It floats on water. It has sharp edges. It has 6 sides. It can be shown as an example for a return max glass. The color is in brown and it cleans the dust. Okay. How many points? 12 points. 12 points. So the prize goes to Mr. Christopher from Indian Oil. 12 maximum, Anna? Okay. Thank you. Okay, now the person who will be doing this very fast will get the prize. This is also perception. 51. Okay. Very good. So this is Adila from Orient Bank. Give them good hands. I believe we were well prepared for this answer because we have to see the presence of mind. How you look at the thing? Thank you. और लिख दो। The first one will get the prize. If 3 days ago was the day before Friday, this is the left and the right day. If 3 days ago was the day before Friday, what will the day after tomorrow be? How do you explain? Explain please, जाके वहाँ explain करिए. Monday. Explain. Whoever is saying, explain. Monday हो गया और Monday. Wednesday, Tuesday, line now. First of all, you have to 3 days ago is Friday. The day before Friday. That is Thursday. So then, what is now today's?
today is Sunday, Saturday, and the day before tomorrow, that is Sunday. Tomorrow is Sunday. That is Monday. Are you in agreement what he is saying? Does it make any sense? Okay, next. No. Ask Please next. the Lord. She is Ruchi, I believe. Ruchi Saxena. Hello, my name is Ruchi. I am from Escorts Limited. Man said, if today, 3 days ago is was the day before Friday. 3 days ago was the day before Friday. What will the day after tomorrow be? Day before is Thursday, and Friday. So today would be is Sunday. Then she said that after 2 days, I heard after 2 days. So it would be Monday and Tuesday. No, it will be Monday or Tuesday. This is Tuesday. Tuesday. Very correct. Ruchi Ruchi is correct. Thank you, ma'am. Please give your hand. Ruchi is correct. ओके नेक्स्ट अजीत आगे चेंज करते रहो इतना आपको दिखाई दे रहा है वो ये ओके नेक्स्ट ओनली 10% ऑफ एनी आई स्पॉट इज 10% उसका दिखाई देता है द रिमेनिंग 90% इज बिलो द सी लेवल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाई आई एम सेइंग दिस नेक्स्ट visible 10% 90% is down next the iceberg phenomenon is also applicable to human beings. Knowledge and skill आपके बाहर का 10% दिखाई देता है, लेकिन 90% क्या है? It is attitude. Next. In other words, behavior. That is knowledge and skill that affects the behavior of a person. लेकिन the value, standard, judgment is all your attitude, where the motives, the ethics and the beliefs start. So these attitude has an impact over the behavior. जो आपका attitude है उससे आपका behavior को impact होता है. आप किस टाइप का attitude है, आपका positive है, negative है, वही आपका behavior affect करता है. उस situation में what attitude you have at a particular situation, what makes your life 100%. If alphabet you see, A is 1, B is 2, C is 3. अगर alphabet ऐसे आप देखो, the skill will be 82. अगर S देखो तो S is 90. इसी तरह अगर आप total करो skills का जो numbering है, it is 82. Knowledge will be 96. Next, hard work will be 98. What makes 100%? Attitude is 100%. Next, the can-do attitude. You can do everything, but not at all at once. अगर आपने motive है करने का, तो ethics है करने के, then you can do things. You can do everything if it's important enough for you to do. You can do everything, but you may not be the best at everything. You can do, but there will be limitations. But there will be need for help. आप कर सकते हो, but sometimes help is needed. A positive thought is the seed of a positive result. If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't complain. The most significant change in a person's life is a change of attitude. Right attitudes produce right results. अगर आपका positive attitude होएगा, then the result will also be good. If you have the attitude, the can-do attitude, the results will definitely, but थोड़ा भी bravery रहा attitude, it can affect, it can have impact on your behavior. If you really want to be happy, nobody can stop you except Allah, God. Next, whether a glass is half full, that is a proverb, but really no. It's half full or full. How you see, how you perceive, that's what the game was also about. How you perceive a
by the employee towards the employer, and that will come with your will, the will to make the organization a successful organization. Next, see the invisible, feeling intangible, and achieves the impossible. The man with confidence in himself gave the confidence of others. अगर आप में confident होएंगे, अगर आप confident होएंगे, we'll be talking about body language also, because that is also a part of self-effectiveness, how to impress others, gain confidence and impress others. अगर आप में confidence है, confidence कैसे आता है? एक आपकी external personality से और एक आपकी अंदर की personality से. External personality is your physique, your way of dressing, how you walk, the gait. That is your external personality. Internal personality आपका behavior है, आपका attitude है, आपकी interpersonal skills है, the leadership skills are there. ये सब आपकी internal personality में आता है, जो impact करता है आप किस वे से लोगों से बात करते हैं, किस वे से लोगों के interpersonal relationship है, क्या आपका relationship आपके वाइफ से है, husband से है, बच्चों से, वो आपकी internal personality से आता है. जो अगर कई बार ऐसा लगता है कि एक आदमी आ रहा है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं जिसको सब लाइक करते हैं कि हाँ दैट इज एक होता है पावरफुल लीडर कि उसमें पावर है, और एक होता है पावर जनरेटेड बाय द पीपल कि उसमें एक अरोमा है, इसमें एक ऑरा है जिसको देख के लोग अच्छा लगता है कि उससे बात करें, कैस्मा है उसमें कि लोग चाहते हैं कि उससे हम बात करें, उससे हम राय दें. That kind of person we want, so that our aura is spread towards the other. अगर एक आप positive हो, आप अपने surroundings को भी positive कर सकते हैं. Okay? That is what I want to try to say. The biggest mistake of all is to avoid situations in which you might make a mistake. Next. A positive attitude is like a magnet for positive results, a reflection of attitude, a chain reaction. Attitude, not aptitude, determines your altitude. Now the meaning, you understand the meaning. Attitude, not aptitude. Aptitude is your knowledge skill. Determines your altitude, how can you height and power. That is the positive. आप देखो कई, जैसे लखानी का मैंने एग्जाम्पल दिया, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, but they have the vision and they have reached an altitude that is a height. There are many success stories. आप अब्दुल कलाम जी का देख लीजिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम. He had the vision in his mind to grow something. Maybe in his childhood he would have never dreamed that he would become the president of India. Next. Sooner or later, those who win are those who think they can. Creative attitude, progress. Forgive others and you will be forgiven. Always have. Don't say you have to do it. Sometimes your bosses say कि आपको ये करना है, आप कहते हैं नहीं. No word should not be used. I will try is the word that has to be used. You have to try to succeed. I will try. Maybe this is a challenging word, but one has to try to achieve things. आगे. Okay. Back. Courtesy is very important. Also a part that we have to see. Next. What is the meaning of courtesy? आगे करते जाओ ना. Positive behavior, positive gesture, favor. According to Mr. Herberg, sincere expression of concept, respect and goodwill. Goodwill is the desire for other well-being. The above feeling can be conveyed through action words. Courtesy क्या होती है? Courtesy क्या होती है? Usually कई बार ऐसा होता है courtesy करते हैं. हाँ, courtesy में क्या करते हैं? अपने बड़ों के पैर. Courtesy is making way for others, giving respect to others. Even if he is your subordinate, but he is an elder person, you have to give respect. Because he is elder, inexperienced. Maybe with the new technology, new blood is there, but he is experienced than you. See, you have to respect him as a senior, and you have to help him to grow.
grow up. Because maybe he has an old school of thought. You have to help him, maybe in his whatever work is there. That is a courtesy, which if you have a respect for your elders, he will have more respect for you. That is what I am trying to say. It involves being aware, not only the perspective of others, but also their feelings. It is politeness that grows out of respect and concern for others. Following suggestions for generating a courteous tone: be sincerely tactful, thoughtful and appreciative. Whenever you are talking to people, be tactful. Then after that I will tell you a story. Use expressions that show respect. Choose non-discriminatory expressions. The rules of courtesy. Develop the you attitude. We said about the you, assertion in you. You attitude, not me attitude. The ego attitude. Use positive words. Select gender-free terms. Respond to message promptly. The you attitude should be there. Project empathy. Replace I or we with you or your. Address the receiver by name. Negative words to avoid.